इस तरह की सब चीजें आप न्यूज में पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए होता है कि वेजर में थर्ड पार्टीज इंटरेस्टेड हो सकती हैं आफ्टर द आउटकम, बट इन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नो थर्ड parties involved after the outcome. Wager is contingent in nature, but contingent contracts are never wagering. Again here, wager is a bigger aspect in which contingent is a bigger aspect in which wager is involved, but contingent contracts are never wagering. Contingent contracts जो होते हैं वो कभी भी wagering के कैटेगरी में फॉल नहीं होते हैं. Never do they fall. Now what is discharge of contract? Discharge of contract मतलब contract complete हो जाना या contract खत्म हो जाना. मोर प्रिसाइजली कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है तो उसको हम कहते हैं कि इट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ लीगल टर्म और अ टेक्निकल टर्म यूज फॉर द टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अब कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन देखिए, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी ईदर पॉजिटिव और negative. Why I'm saying positive or negative? Because there are various ways by which a contract is discharged, that is a contract is terminated, and if it is fruitful then it is called, it is a positive way, and if it is not fruitful, it terminates instantly, or in negative way, then it is called as a negative way of discharge of contract. So the ways which are giving here, discharge by performance. Discharge by performance means कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्रोमिसेस हुए थे वो कंप्लीट हो गया. ए ने बी से जो कहा था वो उसने बी से अपनी प्रॉमिस कंप्लीट कर दी. देन क्या हुआ? परफॉर्म किया. द पार्टी विच हैज ऑफर्ड मेड द प्रॉमिस हैव परफॉर्म्ड, एंड ड्यू टू दिस परफॉर्मेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट्स कम टू एन एंड. देन इट इज कॉल्ड दैट इट इज अ डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट. If due to any problem, any situation, any condition, both the parties agree on this, that okay, now fine, it's enough is enough, now we are discharging our contract, then it is called as discharge by agreement or consent. Discharge by impossibility of performance. If due to any way, any condition, the offerer, for the offerer it becomes impossible to perform the contract, then it is again terminated. There may be many reasons. If A has made a promise to B and it has been converted into a contract, and A dies, A मर जाता है अगर, fine, so how he will be able to perform it? He will not be able to perform it, so automatically this contract will be discharged. All these things are explained here also, you can go through this. See, in discharge by agreement or consent, lots of terms are used here. I will explain you one by one. Novation, if a new contract is substituted, मतलब जो पुराना contract था उसके जगह पे नया contract आ जाता है तो obviously that old contract will be terminated. Rescission, that is all the terms are cancelled, contract ही खत्म कर दिया जाता है. Alteration, a few terms are changed. Remission, acceptance is made to a promise but not on the complete terms. Waiver, parties to a contract abandon their mutual rights, the agreement or the contract is being waived off. Merger, a new contract is being merged into the older one, so obviously that older one will be terminated, and the new contract which has come upon after the merger of the new and the old one, that will be in existence. Discharge by impossibility of performance, that I've just told you, and what may be the reasons: death or incapacity, non-existence of a state of things having an affected directly or indirectly on the contract. For example, if person A has made a contract with person B that you will be using my car for next 3 years, whenever you will need it, you will just have to inform me 2 hours prior and I will give you my car. Fine. And if due to any reason that car gets accident and it is not in running condition, so when the car is not existence, that non-existence of car here discharges the contract. Outbreak of war, if there is an outbreak of war, obviously that is a national emergency condition and all the contracts are considered to be discharged at that time. It is a constitutional fact. Change or amendments in law, the law based upon which the contract has been made, if it gets to change or any amendment is made in that law, then also that contract will be considered as to be discharged or terminated. Discharged by lapse of time. See, according to the Limitation Act, there is an act called as Limitation Act. A contract should be performed within a specified time called period of limitation. Every contract must have this period of limitation, and this time period is being mentioned in that
कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट इफ दैट टाइम इज लैप्स्ड। अगर वो टाइम खत्म हो जाता है और तब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज्ड। Discharged by operation of law. There are various law operations because due to which also contracts are discharged. And what are they? Death of either of the parties, insolvency of the contract, merger of contract into new contract, unauthorized alteration of terms of the agreement. If it is found that पार्टी ए और पार्टी बी, कोई भी पार्टी दोनों में से, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का उसमें कोई अपने आप से कोई अल्ट्रेशन कर दी है, बिना इंफॉर्मेशन के या बिना रजिस्ट्रार के प्रेजेंस के अगर कोई अल्ट्रेशन कर दी है और ये चीज पकड़ी जाती है अगर, देन अगेन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज डिस्चार्ज। देन डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को ब्रीच करना, उसको तोड़ना, खत्म करना। अगर ये कंडीशन भी पाई जाती है देन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी discharged, that is the contract will be terminated. So now we have gone through these many facts, that what is contract, how it is terminated, what are the ways of contract to be terminated, obviously. So agar we have just studied that a contract can also be discharged by breach of contract. So अगर पार्टी ए है और पार्टी बी है, उसमें किसी भी पार्टी ने अगर ड्यू टू एनी रीजन हैव ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑब्वियसली देयर विल बी लॉस फॉर द सेकंड पार्टी, है ना। कोई भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, ठीक है, वेदर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करती है, वेदर बाय दिस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दिस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट by see this point, unauthorized alteration of the terms of agreement, due to any of these reasons, obviously there will be one party which will be in loss में होगी, ठीक है। तो इस केस में उस पार्टी के लिए क्या किया जा सकता है, तो उस पार्टी को, because contract is a lawful term, contract is enforceable by law, a legal document is involved in that, so obviously law will come into the remedy, ठीक है। जो कानून है हमारे देश का वो उसके बीच में बीच बचाव करने आएगा, ठीक है। तो जो बीच बचाव करने आता है और जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है जो पार्टी को लॉस हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन के कारण जो सेकेंड पार्टी को लॉस होता है, उसके लिए जो उसको रेमेडी दिलवाता है कानून हमारा, और लॉ provides remedy, that remedy is called as damages, and it is termed as damages to the due to breach of contract. See, remedy is a means given by law for the enforcement of the right of a person. A common remedy for breach of contract is awarding damages to the affected party. If one party has breached the contract, ठीक है, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है, ठीक, तो दूसरे पार्टी को जो है उसके लिए डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है या जो रेमेडी दी जाती है टू द अफेक्टेड पार्टी फॉर देयर लॉसेस, दैट इज कॉल्ड एज डैमेजेस, नॉट डैमेज, डैमेजेस। रिमेंबर दिस वर्ड, लास्ट ईयर देयर वाज अ one word question in pre-board, and in that one option was without S and one option was with S, and few of students, one or two students, ticked that option of without S. Their answer was wrong because it should be damages. Monetary compensation given to the affected party for the loss or injury caused to him due to the breach is called damages. The objective of awarding damages by the court is to put the injured party in the same position as he would have been if the contract had not been ब्रीच्ड। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ रहता, ब्रीच नहीं हुआ रहता, तो जो भी फायदा हुआ रहता दूसरी पार्टी को, उस स्टेट ऑफ पोजीशन पे लाने के लिए जो कंपनसेशन दिया जाता है उसको कहते हैं हम डैमेजेस। दिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर पार्टी ए और पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पार्टी बी ने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो पार्टी ए है जिसको कि जो भी मिलना था, जो भी फायदा हुआ रहता कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पे, उतना उसको उसकी रेमेडी या कॉम्पनसेशन दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस, एंड दिस होल रूल इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। आप इसको इससे और अच्छे समझ जाएंगे। A agrees to deliver 40 bags of rice to B for ₹20,000 on 15 July 2014. On 15 July 2014, a delivery of only 20 bags of rice to B. B is entitled for damage from A for the loss of that he suffered because of a non-delivery of 20 bags of rice. अभी 20 bags of rice की non-delivery जो है, इसके कारण जो भी लॉस, जितने भी लॉस उसको हुए होंगे पार्टी को, वो उसके